अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नोमान और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग हब। दोस्तों, हमने CSS सीरीज़ फॉर बिगिनर शुरू किया हुआ है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के नेविगेशन बार के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक HTML फाइल बनाता हूँ, नेम देता हूँ इसको न्यू बार HTML। जिस करता हूँ इसको और सबलाइम टेक्स्ट में इसको ओपन करता हूँ। HTML CSS न्यू बार या नेविगेशन बार, हेडर में H1 न्यू बार CSS UL लेता हूँ, UL में LI लेता हूँ, L लाइन में लेता हूँ सबको, एंकर टैग यूज़ करता हूँ, इसका मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर में होम, contact us, home, about, contacts, सर्विसेज। ये हो गया। अभी मैं इस तरह करता हूँ, स्टाइल इस पर करता हूँ, स्टाइल टैग लिया हूँ। अब UL लेस स्टाइल टाइप नहीं रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू, इसको सेव करता हूँ। अभी इसको गूगल क्रोम में इसका रिजल्ट देखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर भी ब्लू है, तो मैं इसको रेडी रखता हूँ। वेट 200 px, अभी मैं ULI बैकग्राउंड कलर ग्रे, पेडिंग 10 px,
2 pixel solid ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन कलर वाइट टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। और इस पे क्या करना है, बस ये हमारे पास अभी हम इसको टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, देखो ये भी हो गया। अभी मैं इस तरह करता हूँ और भी खूबसूरत बनाता हूँ। एच ओवर बैकग्राउंड कलर सही होगा, देखो देखो। तो हम बॉर्डर रेडियस पिक्सल सैलेड देखो रेडियस बन गया। तो दोस्तों ये था हमारे पास नेविगेशन बार एंड CSS। इसमें हम साइड बार भी इस तरह बना सकते हैं और इसमें इनलाइन भी बना सकते हैं, इनलाइन मेन्यू बार भी बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।